बैंगलोर बेस्ड ईवी स्टार्टअप कंपनी सिंपल एनर्जी ने कुछ ही महीनों पहले अपना पहला प्रोडक्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल स्पेस में सिंपल वन इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को मार्केट में उतारा, जिसने 1 लाख की प्री बुकिंग हासिल की है, विच इज अ बिग नंबर रियली। कंपनी को इस बढ़िया रिस्पॉन्स पर आगे के क्या प्लान्स हैं, जहां उन्होंने 2 नए अफोर्डेबल स्कूटर्स पर भी काम करने की बात की है, इलेक्ट्रिक बाइक को मार्केट में लाने की प्लान्स कर रहे हैं, और 2025 तक एक गाड़ी भी यहाँ बनाने की बात हो रही है। सो इलेक्ट्रिक व्हीकल स्पेस में काफी एक्साइटमेंट लग रहा है। कंपनी के हम हेड से बात करना चाहेंगे। इनफैक्ट कंपनी ने अपनी एक और नई इलेक्ट्रिक स्कूटर के लिए .1 नाम को भी ट्रेडमार्क कराया है। सो क्लियरली एक्सपेंशन एंड इन्वेस्टमेंट्स कंपनी के जो लाइंड अप है, वो जानने के लिए सिंपल एनर्जी के सीईओ एंड फाउंडर सुहास राजकुमार के पास चलते हैं और समझते हैं। सुहास, गुड आफ्टरनून, बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो आपसे मैं जानना चाहूंगी, जो रिस्पॉन्स आपको मिला है सिंपल वन स्कूटर लॉन्च जो किया, कैसे आप उसको देख रहे हैं, किस तरह से आप केटर करेंगे इस रिस्पॉन्स को, कितना लंबा वेटिंग पीरियड रहेगा बाय द टाइम गेट दोज प्रोडक्ट्स इन हैंड, और इसकी सक्सेस देखते हुए अब आगे के क्या प्लान्स है? Well, good afternoon. पहली बात तो thank you, for having me for this discussion about Simple One. So, Simple One primarily have two reasons for it to have the kind of pre-bookings हमको जो मिली हैं, एक रफ अबाउट 1 लाख के आसपास। तो हमारा प्लान्स बहुत क्लियर कट था फ्रॉम डे वन कि हमको एक ऐसा स्कूटर इंट्रोड्यूस करना है जो ना कि टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट में आगे हो, बट रेंज और एक परफॉर्मेंस पैरामीटर्स पे भी आगे हो। तो that's a combination that we always wanted to achieve. तो उस हिसाब से हमने उस चीज को डिजाइन करा था और हमने मार्केट में उसको पेश किया था, and the response that we have got is overwhelming. Initially we expected 5,000 से ज्यादा bookings नहीं होंगी, but for that overwhelming response we had planned a certain number, but for that reason we had to rethink about our productions and etc. And we went back to our drawing board for that, and we ramped up our production capacity as of now. But for that to realize, it'll take roughly about 10 months more for us to start doing a steady 5,000 to 8,000 scooters a month. So that's the plan that we have currently. Right now, we are delivering on a small number in Bangalore, but from January we should be able to scale to more than 6-7 cities, and roughly about in next 10 to 12 months we should be present in 100 cities. अब जो आपका फोकस रहेगा, आगे के प्लान्स हैं प्रोडक्ट्स को लेकर, उसको आप क्या टाइमलाइंस पर और कब कब लॉन्च करेंगे, और वो प्रोडक्ट्स कौन से सेगमेंट्स में आप केटर करेंगे? देखिए, अभी तो हमने सिंपल वन लॉन्च किया है हमारा, और एक प्रोडक्ट है .1 जो एक लोअर रेंज और मोर अफोर्डेबल स्कूटर के हिसाब से जाना जाएगा, या फिर इट्स अ सिबलिंग ऑफ अ सिंपल वन। उसमें परफॉर्मेंस पैरामीटर सेम रहेंगे बट रेंज आपको कम मिलेगी। सो उसके हिसाब से हमने उसको डिजाइन करा था, और उसके हिसाब से हम उसको प्लेस भी करेंगे, सो दैट बहुत सारे कस्टमर जिनके लिए सिंपल वन एक स्टीप परचेस है, उनके लिए और एक ऑप्शन मिल जाएगा टू जॉइन द सिंपल फैमिली। सो आई थिंक उसके हिसाब से हमने अभी के लिए .1 डिजाइन किया हुआ है, which will get into production next couple of weeks, and we'll have a formal announcement on that as well. But apart from that, we have one more scooter that is on a very affordable segmentation, जो हम next 12 से 15 महीने के बीच में देख रहे हैं to get into market. आप जो फंड्स कंपनी के $100 million जो एक प्रोजेक्टेड फंडिंग थी, उस पर क्या अपडेट दे सकते हैं, और आगे क्या एक्सपेंशन प्लान्स इससे पूरे होंगे या आपको और फंड्स रेज करने पड़ेंगे? देखिए, फंड रेज हमारे इंडस्ट्री में we have a need of funds every year. We raise rounds, multiple rounds. जब तक हम एक वॉल्यूम पे नहीं पहुंचते हैं या फिर एक स्केल पे नहीं पहुंचते हैं, we keep raising our rounds. And currently we projected to raise 100 million in next 12 months, out of which we have raised some of that, but we have not completed the round yet. So we should be able to complete that in next 3-4 months. क्विकली, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर जो फोकस है अभी, गवर्नमेंट इज ऑफ कोर्स ट्राइंग टू व्हीलर्स में, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स और ग्रोथ हम अच्छी देख रहे हैं एज कम्पेयर टू कार्स। सो इंफ्रास्ट्रक्चर पर आपका कितना फोकस रहेगा, वहां पर क्या इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं आप? अगर आप चार्जिंग इंफ्रा की पर्टिकुलरली बात करें, उसमें एक ग्रोथ पोटेंशियल है, बट इट इज नॉट अ बाइंग डिसीजन एज येट। नीड है, बट देयर इज ऑलवेज से दैट स्कूटर्स ज्यादा हो या चार्जिंग इंफ्रा ज्यादा हो, तो वी वांट टू हैव इट प्रोपोर्शनेट। अगर मान लो 1 लाख गाड़ी है,
We don't want to have more than 3,000 charging stations in the country, because they suffice the current needs of it. Because charging for you is an emergency part of it, जहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ तभी चार्ज करेंगे जब आपके पास बहुत ही कम रेंज बचा हो या फिर इमरजेंसी के लिए हो. Otherwise, घर पे चार्ज करने के लिए I think a lot of people have now developed that kind of understanding कि EVs के लिए क्या चाहिए. Societies have been taking steps on it, and we have been supporting on that front as well. So we want to start a product level charging infra and also a universal level charging infra, जहाँ पे हम दोनों चीज को merge करें और हमारे चार्जिंग इंफ्रा से ना कि हमारी गाड़ी चार्ज हो, बट ऑल्सो a third party scooter or a car or any other vehicle that is possible with that, so that this becomes a revenue potential for us and also becomes easy for a consumer to do. So in next 15 months we target to install about 2,000 charging infras across India. क्विक सवाल और आखिरी, इलेक्ट्रिक व्हीकल में टू व्हीलर से तो आप जर्नी शुरू कर रहे हैं विद योर स्कूटर्स, फिर अफोर्डेबल स्कूटर्स, एंड देन इवन द कार प्लान्स, आप फोर व्हीलर भी यहाँ लाना चाहते हैं, तो एग्जैक्टली क्या प्लान्स है फोर व्हीलर को लेकर? देखिए, एम्बिशंस सारे स्टार्टअप्स की हैं, हमारी भी हैं. हम एक एनर्जी कंपनी है. वी वांट टू सॉल्व द एनर्जी थ्रू मोबिलिटी, राइट. दैट्स द फर्स्ट स्टेप दैट हमको लेना था. हमने टू व्हीलर्स चूज किया बिकॉज वहाँ पे सबसे ज्यादा अडॉप्शन इंडिया में होगा. इंडिया इज ऑल्सो द लार्जेस्ट मार्केट फॉर टू व्हीलर्स आफ्टर चाइना. आई थिंक उसके दरमियान फॉर अ स्टार्टअप टू लुक एट अ फोर व्हीलर is going to be a very important aspect for any startup which is come at a stage that we are, who are in production, who have a great product to offer. But उसके कुछ fundamentals हैं जो हमको focus करने हैं. So we are trying to make it as fast as possible, but roughly about 2025 we should be able to have a solid answer on when we introduce it to the market. Though we have been working on power, हमारी strength ही energy R&D है, so we have been focused on that. So by 2025 we have an ambition of introducing a model, a concept at least, and then look at how we can productionize as soon as possible. पर आप कौन से स्पेक्ट्रम में वो गाड़ी लाना चाहते हैं? लोअर एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम, हायर एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम, या मिडिल? देखिए, मैं मिडिल क्लास से आता हूँ, सो मिड इज व्हाट आई वुड ऑलवेज फोकस ऑन, बिकॉज हमारी नीड बहुत ही कॉम्प्लेक्स है. We want more range, more comforts, more features in a product, but at a price point which is much lower. So kahin na kahin, the mid band, which has grown over 20% to 30% in last 6 years, I think that is going to be a big band, because buying a 15 lakh car 6 years back was a big thing, but now people are buying 15 lakh cars like they used to buy a 6 lakh car. So the price band is increased, but at the same time it becomes a important aspect for an automaker to look at this as an opportunity, because abhi customers are not shying away from buying a good product. They are not looking at compromising on safety या फिर बहुत सारी चीजें. So mid band is a safer way to innovate, and यहाँ पे सबसे ज्यादा innovation आ सकता है. Luxury is a byproduct of what you do with the mid band. Okay, fair enough, and that's a good strategy. बहुत शुक्रिया सुहास, lovely speaking with you. All the very best. Thanks. Thank you so much. Thank you.